Hello students, my name is Richa and today we are going to do part 3 of the chapter Why Do We Need Parliament? Now in my previous video we talked about one of the function of the parliament, that is to select the national government. Now in this video we are going to discuss about two more functions of the parliament. Now, the second most important work of the parliament after the selection of the national government is to control, guide, and inform the government. Now, when we are talking about the government, we are actually talking about the executive, prime minister, and the council of ministers. The parliament, while in session, begins with a question hour. The question hour is an important mechanism through which MPs can elicit information about the working of the government. This is a very important way through which the parliament controls the executive. Now, what happened? Every year, the parliament is having the 3 sessions. Okay, now in these sessions when it starts, every day some time is allotted for asking the question. The parliament begins with the question hour. Now what happens in this question hour? In this question hour, the member of parliament who are chosen by the people, they ask the question to the government, to the ministers, about the various programs and the policies. And this is a very important way through which the parliament controls the executive, because when the member of parliament asks the question, it is mandatory for the government to answer. Government cannot ignore the questions asked by the members of parliament. By asking questions, the government is alerted to its shortcomings and also comes to know the opinion of the people through their representative in the parliament, that is the MPs. Asking questions of the government is a crucial task for every member of parliament. The opposition parties play a critical role in the healthy functioning of a democracy. They highlight drawbacks in the various policies and programs of the government and mobilize popular support for their own policies. Now see students, now by asking the question, what happens? By asking the question, the government comes to know about what is the public opinion about their programs and policies. Sometimes when members ask the question about the various programs and the policies, government come to know about its shortcomings also and how they can improve upon it. The discussions are healthy discussions and government get lot of feedback how to improve itself. The government gets valuable feedback and is kept on its toes by the questions asked by the MPs. In addition, in all the matters dealing with the finances, the Parliament's approval is crucial for the government. This is one of the several ways in which the Parliament controls, guides, and informs the government. The Member of Parliament, as representative of the people, have a central role in controlling, guiding, and informing Parliament, and this is a key aspect of the functioning of Indian democracy. Now let me take you back to the previous slide. Now see about the question hour and mark it. It is very important. What is this question hour? आखिर इस question hour में क्या होता है? Question hour एक ऐसा समय होता है पार्लियामेंट में जिसमें जो लोग चुनकर चुनाव जीतकर पार्लियामेंट पे पहुंचे होते हैं, चाहे वो लोकसभा के मेंबर हों या वो राज्यसभा के मेंबर हों, ये सरकार से अपने सवालात पूछते हैं उनके वेरियस प्रोग्राम्स और पॉलिसीज़ के बारे में, और सवाल वो जो भी सवाल करते हैं सरकार को उसका जवाब देना होता है। कई बारी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं वो सरकार को सुझाव भी देते हैं कि जो प्रोग्राम चला रहे हैं या वो जो कार्य कर रहे हैं उसको कैसे और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। और कई बारी
जो एमपीज़ हैं अगर सरकार ठीक से काम नहीं कर रही है या फिर उसमें कुछ कमी है तो इसके बारे में भी सरकार को बताते हैं। तो इससे क्या होता है, सरकार को अपने कार्यों के बारे में, अपने प्रोग्राम्स के बारे में, अपने पॉलिसीज़ के बारे में या जनता क्या सोचती है इसके बारे में उन्हें पता चलता है, एक फीडबैक मिलता है। और इस फीडबैक की वजह से सरकार जो है एक स्मूथ फंक्शनिंग कर पाती है। जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, जो एमपीज़ हैं, ये कौन होते हैं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो लोग हैं जिनको हम चुनाव में चुनकर एज ए रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट में भेजते हैं। तो ये जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ये जब सवाल पूछते हैं और सवालों का जवाब जब सरकार को देना पड़ता है तो सरकार, ऐसा नहीं है कि ये जो सवाल पूछते हैं उससे सिर्फ सरकार के बारे में वो गलत ही बताते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि वो सरकार को सुझाव भी देते हैं, उन्हें बताते हैं कि किस तरह से वो अपना काम ठीक से कर सकती है। तो किसी भी डेमोक्रेसी के हेल्दी फंक्शनिंग के लिए एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन होना भी उतना ही ज़रूरी है। ओके तो पार्लियामेंट का एक दूसरा बहुत इम्पॉर्टेंट काम क्या है? दैट इज़ टू कंट्रोल, guide and inform the government. And the last but the most important, that is the work of making the law. Our parliament is our legislature. Okay, the parliament is the legislature and its main function is to make the laws. Now how these laws are to be made? The bill is introduced in either house of the parliament. A bill can be introduced in the Lok Sabha also, or it can be introduced in the Rajya Sabha also. Then debates and discussions take place between members of the Lok Sabha or Rajya Sabha. After that voting takes place. अगर बिल लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया है तो जो भी इंट्रोड्यूस करते हैं वो जो मेंबर्स होते हैं उन्हें बताते हैं कि इस कानून के बनने से क्या फ़ायदे होंगे, और उसके बाद उस बिल के ऊपर डिबेट्स एंड डिस्कशंस होता है और फाइनली वोटिंग होती है। अगर वोटिंग में ज़्यादा लोगों ने बिल को पास करने के लिए वोट दिया तो वो बिल पास हो जाएगा। मान लीजिए अगर बिल लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ और लोकसभा से पास हो गया तो फिर वो बिल जाएगा राज्यसभा में, और राज्यसभा में भी सेम प्रोसेस होगा, डिबेट होगा, डिस्कशन होगा और फिर वोटिंग होगा। और जब वो बिल राज्यसभा से भी पास हो जाता है तो उस बिल पर प्रेसिडेंट अपने सिग्नेचर करते हैं, और जब प्रेसिडेंट उसको साइन कर देते हैं तब वो बिल क्या बन जाता है? कानून बन जाता है। ओके सो पार्लियामेंट इज द लेजिस्लेचर ऑफ आवर कंट्री. बिल इज इंट्रोड्यूस्ड इन ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. इट कैन बी लोक सभा ऑल्सो, इट कैन बी राज्य सभा ऑल्सो. Then debates and discussions take place, and after that voting is done. When the bill is passed from both the Lok Sabha and the Rajya Sabha, it goes for the assent of the president, and after the assent of the president, bill becomes the law. Okay, thank you.